And so when you read it, it's like ये बंदा आज से 30 साल पहले लिख रहा था और एक भी चीज़ चेंज नहीं हुई। देखिए, why do you need to go to the IMF? You go to the IMF because you don't have the money to pay back the loans that you have. And in particular, you don't have foreign currency to make those payments. और इसका connection जो है वो दो चीज़ों से है. The first is your trade deficit, which means कि आपकी imports ज़्यादा हैं और exports कम हैं. So when you import something, you have to pay in dollars. When you export something, you get dollars. If you have to pay more dollars than you are getting, then you have a dollar shortage in the economy. So that's one part of it. The other part is that you have a fiscal deficit, or the government is spending more money than it earns in terms of taxes, or it extracts in terms of taxes. So government की liabilities भी बढ़ रही हैं. And so the reason that we go back to the IMF in particular is the external sector deficit that we run. उसकी वजूहात क्या हैं? I think a part of it has to do with the government overspending. Historically, we've played around with the exchange rate, and in our history, हम consistently डॉलर को सस्ता रखते हैं कंपेयर टू वेयर इट शुड बी. नाउ बहुत लोग जिन्होंने इकोनॉमिक्स बहुत नहीं पढ़ी हुई, उनका ये ख्याल होता है कि जितना सस्ता डॉलर होगा उतना अच्छा है. बट दैट्स ओनली हाफ द स्टोरी, बिकॉज वाइल इट्स ट्रू कि जो आपने लेट्स से आपने लैपटॉप लेना है, आपने फ़ोन लेना है, छोटे से छोटा मोबाइल लेना है, जो चीज़ बाहर से आ रही है, इवन पेन पेंसिल, अभी मैं स्टेशनरी शॉप में खड़ा हुआ था, नोटबुक और पेंसिल भी बाहर से आ रही है, उसको हम डॉलर्स में ख़रीदते हैं. तो इतना सस्ता डॉलर है, लॉजिकली उतनी सस्ती चीज़ आएगी. वहाँ तक तो ठीक है. बट द प्रॉब्लम देन बिकम्स कि जब आप चीज़ को एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो आपकी क्योंकि डॉलर सस्ता था, कन्वर्सली ऑन द ऑपोजिट साइड रुपी रिलेटिवली महंगा था, यानी $1 से कम रुपए लिए जा रहे हैं. तो जब आपकी एक्सपोर्ट जानी है वो उतनी कंपेटिटिव नहीं जाती, एंड सो आपकी एक्सपोर्ट्स डिप्रेस्ड हैं. सो हिस्टोरिकली ये होता है. I think, as far as I can tell from my reading of politics, it is more than anything a vanity project. But there also might be sort of special interests who are ensuring that the dollar is cheaper than it should be. So that's part of the problem. Fiscal responsibility पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं रही और कभी से भी नहीं रही. तो आप जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो एक ही उसमें चल रहे हैं, पैटर्न में चल रहे हैं. There's a nice quote from Lee Kuan Yew, the founder of Singapore, और उनको नवाज शरीफ साहब ने कहा, आई थिंक इन द अर्ली 90s, कि आप आके पाकिस्तान के मसाइल पर एक छोटा सा एनालिसिस करें. Lee Kuan Yew was prized among world leaders for his very deep perception of country problems. So diagnosis के लिए उन्होंने कहा कि आप देखें, और पाकिस्तान से माहिरीन गए उनके पास, उनको ब्रीफ करने हैं. वो शायद एक दो उन्होंने दौरे भी किए, एंड उन्होंने जो बातें बताई वो अगर आप पढ़ें तो वो तकरीबन आज भी उसी तरह. Did he publish a paper? He didn't publish a paper, he just wrote a very brief note. और उनकी जो उनकी किताबों में से एक जो है उसके अंदर उन्होंने उस चीज़ को बयान किया है. सो वो मसाइल जो हैं वो ये हैं कि there's rampant corruption and rampant for example power theft, जिसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट डेफिसिट एक्रू कर रही है. We've hired more people into government than we need, and interestingly in the wrong sectors. So there are parts of the government that need more people, and we can talk more about that, and there are parts of the government that need less people. तो गलत jobs में गवर्नमेंट ने हायरिंग की जिससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी. And then of course so government running fiscal deficits, exchange rate overvalued, corruption, and sort of your tensions with India. And so when you read it, it's like ये बंदा आज से 30 साल पहले लिख रहा था और एक भी चीज़